Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. And today I'm going to talk about this artificial intelligence tool that can make your life easier. So yes, आज मैं आपको ऐसे 10 artificial intelligence tool बताने जा रहे हूँ जो आपकी life को easier कर सकते हैं. Whether you are a working professional or you are a student or maybe you are a business person. So I believe this video gonna help a lot to all of you. I mean, it's for the broader audience, like maybe anyone जिन्हें राइटिंग करनी है, प्रेजेंटेशन जनरेट करनी है, वीडियो एडिट करनी है, और मे बी दे वांट टू capture the meeting minutes. So this can be beneficial for all type of audience. So I thought I mean, as I've created video on the artificial intelligence, why not to create video on the what are the top 10 AIs which is available and that can make your life easier. So that's where I have that's where I'm creating this video. So I have done a thorough search. I mean, it's not like I have just opened the Google and then जो भी ऐसे top 10 AI आ रहे थे मैंने आपको बता दिया. No, I have done a search, a thorough search for that. Like जो मुझे लगा कि हाँ वो 10 best AI tools हैं जो आपकी life को easy कर सकते हैं. So that I'm going to cover on this video. So I mean, before jumping into those actual AIs, I just want to give you the overview of the AIs, those who don't know or have no clue about the artificial intelligence. So you are hearing a lot that this AI is pretty quick and that AI is making the human jobs easier. मतलब कि AI जो है वो human beings की job को बहुत ज़्यादा आसान कर दे रही है. मतलब आप एक single prompt दे करके AI से पूरे content write कर सकते हो. Maybe if you want to write a job description for the medical writer, you will simply give a prompt that write a job description for the medical writer, and this AI will write the whole job description for that medical writer. Or similar for the resume, or maybe if you want to create a PowerPoint presentation, you just need to give the certain data to the maybe AI tool, and that AI will create the whole PowerPoint presentation. So आप देख सकते हो कि AI ह्यूमन बीइंग के जॉब को कितना इजी बना दे रही है. So I've also created whether AI is dangerous for human being or not, although that is the complete separate topic. But आज के वीडियो में मैं ये फोकस करने वाली हूँ कि AI जो है ह्यूमन बीइंग्स के जॉब को कैसे इजी कर सकती है, and what are the top 10 tools available that I personally believe that everyone should know, because हम अपने डे टू डे अपना वर्क करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में हो, या आप राइटिंग में हो, या आप किसी भी डोमेन में हो, क्योंकि हमें क्या होता है कि हमें राइटिंग करनी होती है, हमें वीडियो एडिट करना होता है, अगर आप में भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो तो आपको मीटिंग मिनट्स लिखना होता है. ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं कि डे टू डे बेसिस पे लाइफ में हमारे चलती रहती हैं. तो वाई शुड we are not aware about what are the tools available? So I believe that we should aware what are the tools, AI tools is available or are available that can make our job easier. So that's where I'm creating this video, so you all can go and watch all the tools, like AI tools is available. I'm not going into the very depth of those AI tools, because that will consume too much amount of time. So I'll just talk a brief about those AI tools, like क्या मतलब वो कौन मतलब दैट AI टूल इज डेडिकेटेड फॉर विच टास्क, तो वो किस टास्क के लिए AI टूल है, एंड हाउ इट कैन मेक योर जॉब और लाइफ ईजियर. सो मैं जस्ट बेसिक्स बताऊंगी. हाउ एवर इफ यू वांट टू लर्न स्पेसिफिकली अबाउट एनी AI टूल की, फॉर एग्जाम्पल ChatGPT कैसे वर्क करता है, या फिर maybe any other tools which I'm going to cover today, if you want to learn in depth, then definitely you can add your comment into the comment box, and then I'll read the chat box, and based upon that I'll create separate video on that topic. Although it's my plan that I'll create separate videos on the main AI tools जो कि बहुत beneficial है आप सब लोगों के लिए, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी. But as of now I'm just going to give you the quick overview, like which AI tools are available here that can make your job easier. So without wasting a single minute, just let's get started. So I'll just talk about those. I hope you all can see my screen. So let's get started. So first tool is copy.ai. So ये क्या करती है, ये कंटेंट क्रिएशन का काम करती है. आप कोई सा भी प्रॉम्प्ट इस टूल को दोगे, that will write the whole content for you. Maybe you will give a content that write a job description for this, or write a resume for maybe
सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और मे बी आपको कुछ भी ऐसा कंटेंट जो लिखवाना है, देन यू विल गिव अ prompt, and that will be, automatically the whole content will be generated. So if you want to know more about this, then you can, scroll a bit, that run and scale your go to market with AI. So it is for the content creation, enrich your CRM, and then scale your prospecting effort or much more. So this tool is, specifically designed for the content writing. आप देख सकते हो कि ये कैसे work करता है. आपको input देना पड़ेगा, and then, based upon that it will, write the email or write the content for you. जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने input दिया, and based upon that इस टूल ने क्या किया है कि आई मीन ईमेल की सब्जेक्ट लाइन लिखी है, एंड देन पूरी ईमेल जनरेट की है. सो आपको जस्ट एक सिंपल, prompt देना है, and based upon that this tool will, write the whole content for you. So for that, I think firstly you need to log in for that, and then maybe if you have not yet sign up for that, you need to पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, देन यू कैन लॉग इन, एंड उसके बाद आप इसको टेस्ट कर सकते हो कि हाउ दिस टूल इज वर्किंग. सो या फर्स्ट प्लेटफॉर्म इज अबाउट द कंटेंट क्रिएशन, एंड एज आई मेंशन, तो आप देख सकते हो कि हाउ इट इज वर्किंग. सो देयर आर, some samples as well, and I just also want to highlight that इसका free version भी available है, paid version भी available है, but I am sure कि आपका जो free version में ही आपका work हो जाएगा. You do not need to go with the paid version. Although अगर आप जाना चाहते हो, maybe अगर आप बहुत ज़्यादा maybe content creation में हो, and you feel that that can be beneficial for you to buy, then you can go and buy, because I am not promoting any tool or something. I just want to highlight that, these are the best tools available that you can, explore. So free version से भी I am pretty much sure कि आपका काम हो जाएगा. So now let's move on the another tool, that is the Jasper AI. So that is also for the, content creation. So आप content writing and all, तो आप जो भी जो भी आप prompt दोगे, based upon that this tool will write the content for you. I'll scroll a bit so that you can get some idea about, this tool. So simply what you need to do, you need to log in. Like अगर आपको log in करना है, या तो आपको पहले sign up करना है, that you can do that. And in addition to that, you can say that, it help in team to achieve both speed and performance. तो आप definitely जब आपको artificial intelligence tool जब आपकी चीज़ों को, write करेगा, content create करेगा, and all, तो आपका work easy हो जाएगा. So yeah, this is specifically designed for the writing purpose. So you can see that कि ये इनकी, सारे information है, how it's managing the project management, content creation, and then review and optimization. So yeah, everything can be done, but for that you need to give the command to the tool. So that is the Jasper one, and as I mentioned, इनका free और paid version है. So it's up to you how you want to go with that. अगर आपका free version से काम हो जा रहा है, I'm sure हो जाएगा, so you don't have to worry. But however, if you want to go with the paid version, so yeah, it's up to you. Now moving to the third one, that is the Scribe. So how this tool is working, ये क्या करती है, किसी भी कोई सा भी प्रोसेस आप इसे बताओगे तो ये स्टेप बाय स्टेप गाइड में उसे टर्न कर देती है. मे बी इन्फोग्राफिक्स और द मोर और लेस स्टेप बाय स्टेप गाइड में भी आप देख सकते हो. व्हाट आर द टास्क, मे बी ऑन बोर्ड द न्यू हायर, क्रिएटिंग द SOP, बिल्डिंग द ट्रेनिंग डॉक्स, आंसर क्वेश्चंस और असिस्ट कस्टमर. सो दैट्स हाउ दिस स्क्राइब इज वर्किंग. बहुत सारे इस टूल के काम है, बहुत मतलब अगर आप अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, या आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, एंड ऑल्सो दैट्स वेयर आप कोई ऑफिस रन कर रहे हो. डेफिनेटली जब आप ऑफिस रन करते हो तो आपको ज़रूरत होती है कि कोई SOPs बनाए, आपके जो भी टास्क हैं या फिर आपका जो भी डोमेन है उसके लिए SOPs चलती है. एंड देन जब आप किसी न्यू पर्सन को ऑन बोर्ड करते हो तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है, डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल्सो फॉर देयर दिस टूल इज़ प्रीटी हेल्पफुल. सो आई थॉट इट शुड बी I should discuss this tool with you. So these are the some of the, they have explained how this is going to work. And as Google, Microsoft, they have they are using this tool, so that this must be very beneficial, or maybe the standard of this tool is pretty high. That is that is why it's used by the Google or Microsoft or the big companies. Now I'm moving towards the next one, and that can be beneficial for all of us. That is the removing the unwanted object from the picture. So
हम बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करते हैं, मे बी आप अपने यूट्यूब के लिए कुछ वीडियोस बनाना चाहते हो या कोई पिक्चर डालना चाहते हो, तो समटाइम्स क्या होता है बैकग्राउंड में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हमें उन्हें रिमूव करना होता है. सो दिस वेब थ्रू दिस वेबसाइट यू कैन इजिली रिमूव द बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट from any picture, and that too is completely free. So what you need to do, you simply need to upload the picture, and then I'll scroll a bit so that आप देख सकते हो कि कैसे ये वर्क कर रहा है. So now you can see that कि कितने easily ये कार यहाँ से रिमूव हो गई. So that's how this background remover or picture remover is working. So there are some amazing results. I have personally used this magic studio for my work. So yeah, I will highly recommend you to use this one. So this is not a paid promotion, but yeah, if you need it, and if it is you found this beneficial, then definitely you can use this one, because as you can say that there are 18 million user, they are using worldwide this app, this AI tool, and then they have almost used 120 million picture to remove the object. So you can see that it's a some must know website, you can say that, because हमारे डे टू डे वर्क में भी कभी कभी होता है कि हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती है. सो आई थॉट इट्स गुड टू मेंशन अबाउट दिस वन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द मीटिंग नोट्स. सो ये ऐसा टूल है जो आपकी मीटिंग मिनट्स को कैप्चर करेगा या मीटिंग की नोट्स को कैप्चर कर लेगा. सो यू नीड टू आई मीन merge or install this tool in your system, and then आपको मीटिंग्स में सेट करना होगा. मे बी जो भी आप माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू रन कर रहे हो या गूगल के थ्रू रन कर रहे हो, देयर यू नीड टू ऐड दिस एक्सटेंशन ऑफ दिस AI एप्लीकेशन. देन जब भी आप मीटिंग रन करोगे तो वो उसकी पूरी नोट्स कैप्चर कर लेगा. देयर आर मल्टीपल फॉर्मेट्स, लाइक अगर आपको पूरी होल नोट्स चाहिए या मीटिंग मिनट्स चाहिए, तो इट्स अप टू यू हाउ यू वांट दैट नोट्स. सो उसके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू क्लिक सर्टेन ऑप्शंस, देन you can get the summary of the meeting. So you can say that how this is outlining the process. So summary, outline, progress update, and upcoming deadlines and all. So I found this is pretty useful. Then I thought it's good to mention about these tool. So you can say that meeting notes for every minute, so every meeting. So for every meeting you can set, and if you want to focus on the meeting only, आप नहीं चाहते कि कोई रिसोर्स आपके टीम में मीटिंग मिनट राइट करे, क्योंकि क्या होता है जब हम मीटिंग रन करते हैं, सो देयर आर वन स्क्राइब पर्सन हु इज राइटिंग द मीटिंग मिनट्स. सो इफ यू डोंट वांट टू go with that manual writing, so आप इस tool को install कर सकते हो, and then based upon that this tool will write the meeting minute from your meeting. So also it will be helpful to recall something from the past meeting. So there are bunch of options available. तो अगर आपकी कोई meetings past में हो चुकी है, then still if you will sync this tool with your previous meeting, then you can also get meeting minutes for the previous meeting as well. So it's very easy, and I found this very helpful, और I can say that क्योंकि जब आप business में होते हो या corporates में होते हो तो बहुत सारी meetings होती है, and it's very hard कि every time आप किसी को बोल रहे हो कि तुम scribe करो. So it's very good to know that there are tool and that can scribe the meeting minutes for you. So if you are a working professional, if you are not yet aware about these tools, then you can go and share this tool within your organization, so that your team can use, and they can save their time, and also the accuracy will be high in this meeting minutes. So आपको क्या करना होगा बहुत ज़्यादा, what you can do, you can perform a quick review of that meeting minute, whatever this tool is creating, because tool is tool, still you need to take a quick click like कि सारी चीज़ें perfectly written है या नहीं. So that's where you can perform quick QC of that meeting minutes. But other than that, I am sure this is pretty helpful for the organizations. So yeah, so this is about this tool, and then you can stay informed without attending, and you can automate your follow-ups. So there are certain good features कि आप जो भी follow-ups है उसको automation के through कर सकते हो. Maybe कोई person है, there are a person A that need to do certain task by this time, so you can also send the follow-up emails via this feature. So ये सारी चीज़ें sync है. I cannot show the practical example, but yeah, in my upcoming video I'll try to show some practical examples, because I found this very helpful. तो बहुत अच्छा है कि instead of doing things manually, since AI is there, this feature is there, then why not to use. So I thought it's good if you are aware about these tools, and then you can utilize this in your organization in order to be more productive and save the human beings or the manual efforts. So yeah,
So this is all about this applications, turn meeting into achievements with assembly task. And also, this is all about, this assembly applications. And you can say that these are the some examples how they have, created the meeting minutes and all. So yeah, this is all about that. And now I'm moving to the next one, that is the Lumen 5. So I found this one pretty interesting because it's a ऑनलाइन वीडियो क्रिएटर दैट विल मेक एनीवन लाइफ इजी। और मैंने देखा है कि बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है जो जो जिन्होंने इनके साथ पार्टनरशिप किया है या जो इस टूल को यूज़ करते हैं, लाइक मर्क और ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज। आई शो यू, जस्ट शो यू, I'll scroll a bit and then you can see that Merck, PwC, Salesforce, KPMG, ये आप जानते हो ये सारे बहुत अच्छी कंपनीज है, सिस्को एंड ऑल। सो ये सारी कंपनीज दे आर यूजिंग दिस टूल फॉर क्रिएटिंग द वीडियो फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लिप्स अवेलेबल हैं, आइकन्स अवेलेबल है, म्यूजिक है, स्टाइल, फॉर्मेट. So you can use this tool for creating a video for, I mean, for your professional organization or maybe for your YouTube, और जहाँ पे भी आपको लगता है मे बी आप अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए वीडियोस बनाना चाहते हो. सो आई फाउंड दिस वेबसाइट प्रीटी यूजफुल. सो आपको सबसे पहले साइन अप करना है, देन वंस यू विल क्रिएट योर आई मीन आईडी एंड ऑल, देन यू कैन गो एंड क्रिएट द वीडियो फॉर योर मे बी सोशल मीडिया मार्केटिंग, और आपको जैसा भी रिक्वायर्ड है, आई मीन बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट यू कैन क्रिएट. सो आई नो समटाइम्स वी स्ट्रगल कि उसने वीडियो एडिटिंग करी, बहुत अच्छी करी, एंड समटाइम्स वी हायर वीडियो एडिटर एज वेल जो हमारे लिए वो काम कर सके, एंड दे चार्ज अ लॉट फॉर क्रिएटिंग सच टाइप ऑफ वीडियोस, बिकॉज हमें पता नहीं होता ना कि ये वाले क्लिप्स कहाँ से मिलेंगे, एंड देन इतने अच्छे अच्छे आइकन्स कैसे यूज़ किया और टेक्स्ट एडिटिंग कैसे करी. पूरी होल वीडियो बनाना इज नॉट अ ईजी टास्क, बट when there is one application where you can get all the clips, colors, icons, maybe everything, it's kind of one stop shop, then you can easily go and create video. सो आई डोंट थिंक सो, आई मीन कि आप वीडियो एडिटर पे इतने सारे पैसे खर्च करो व्हेन यू नो दैट दीज आर द टूल्स विच इज़ ऑलरेडी आउट देयर, जिसे आप यूज़ कर सकते हो, अपनी चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना सकते हो. मे बी इफ़ यू आर अ business owner, if you are running a small business, so this can be useful for you. Or if you, I mean, if you want to become a social media manager and all, then still it's very beneficial to know these type of applications or tools which is already out there. And I just also want to highlight that कि it's not possible कि ये पूरा tool completely free होगा. I'm pretty much sure that कि कुछ फीचर्स फ्री होंगे, कुछ पेड होंगे, बट आई नो स्टिल वो फ्री फीचर्स के साथ भी आपके वीडियोस बहुत अच्छे बन सकते हैं. सो इट्स अप टू यू कि आप जब आप बहुत हाई लेवल पे हो एंड यू आर रेडी टू स्पेंड सम अमाउंट ऑफ मनी एंड ऑल इन ऑर्डर टू क्रिएट अ वेरी हाई प्रोफाइल वीडियो, तो आप स्पेंड कर सकते हो. बट हाउ एवर इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच अमाउंट ऑफ मनी बट स्टिल यू वांट टू क्रिएट वीडियो, and still you can go with this application. And I found this pretty helpful. I know I'm a YouTuber and sometimes I need to create videos and all, and I do some these type of tasks for my organizations as well. So I thought, why not to bring this to on my YouTube channel and talk about this application, and this can be beneficial for you. And I'm pretty much sure I mean, it's for the broader audience. It's not like it's for these students or anyone. I know YouTube पे बहुत सारे लोग videos watch करते हैं, so somewhere I know कि this can be helpful for some of you. So yeah, that is the intent to bring this tool here. And now moving towards the second one, that is about the resume template. And this is pretty useful for all the working professional or the students or those who are actively seeking for job. So आपको मैं बता दूं कि ये वेबसाइट है, यहाँ पे बहुत सारे रिज्यूम्स के एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं. मे बी इफ यू आर इन आर्ट डोमेन, साइंटिस्ट, और मे बी इन द साइंस डोमेन और फार्मा डोमेन, मे बी मिलिट्री, आर्ट्स, एंड देयर आर बंच ऑफ डोमेन्स आर देयर. और बहुत सारे हर एक डोमेन्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल है. इनफैक्ट अगर आप चाहते हो अपनी रिज्यूम राइट कराना, सो आई बिलीव you can take those you can, there are features. However, those are I believe paid अगर आपको अपनी personalized resume बनाना है. But if you already have all the content and everything is there, or there are templates or examples as well, so you can go and utilize those free features and create the very impressive template. Because resume is kind of your identity. When you are sharing your resume with the HR is not going to see that who is Shivangi, how she is looking, what talent she has. No, they are going to watch my resume, like whatever is written there, and how beautifully I articulate all the sentences, or how
हाउ प्रोफेशनली आई कैन से दैट कि मैंने कितने अच्छे से अपने वर्क को एक्सप्लेन किया. इट्स नॉट इन वेरी डिटेल, इन वेरी प्रिसाइज, बट ऑल द की इंफॉर्मेशन इज देयर. सो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज दैट्स हाउ यू विल गेट स्क्रीन फॉर द फर्दर राउंड, कि उन्होंने आपको फर्दर राउंड के लिए सेलेक्ट किया. एंड देन बिकॉज कोई जब कोई जॉब पोस्ट होती है तो वहाँ बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं. एंड हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, तो अदर्स से डिफरेंट होने के लिए आपको कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा. सो दैट्स वेयर आई एम सेइंग दैट it's very important to create a very effective resume. So for the beginner, I know I have created dedicated video कि आप कैसे, जो लोग beginners है वो अपना resume कैसे बना सकते हैं. And I've also talked about the Canva website जहाँ पे भी templates available है. But I specifically want to specifically mention about this topic as well, because this tool is pretty useful, and bunch of templates are available. So I found it's very important to mention about that. And I'll create separate video, in order to get how you can get the highest paid job by the effective resume. So I will create separate video on that part, so don't worry about that. But yeah, I just want to highlight about this tool जहाँ पे कि बहुत सारे templates available. So I'll scroll a bit so that you can see that कि कैसे ये टूल वर्क करता है. सो यू कैन सी दैट दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर द रिज्यूमे, और आप देख सकते हो कि कितने impressive templates available, and those are too completely free. So you can usually edit your resume within this tool only. So there are resume for the account, finance, administrative, art and design, automotive, business, construction, customer service, education, engineer, food productions, healthcare, hospitality, human resources, IT, legal, management, manufacturing, marketing, military, others, retail, sales, science, software, engineering, students, transportation, logistic, volunteering. And I can say that this is the one application where I'm saying that all types of templates are available, because this is dedicated for the resume. Because I have saw many applications, but I've never seen where such type of detailed classification is present, where all type of domain resume template is available. So guys, trust me, I believe this is one of the bestest applications or tool, I can say that, जहाँ पे आपको इतने सारे format मिल जा रहे हैं. And those two are kind of very high level or very impressive resume जो कि आप यूज कर सकते हो. उनका templates बहुत अच्छा है. So if you have not yet created your resume, or if you want to upgrade your resume, so go and use this website. And I cannot emphasize more, because आप देख सकते हो कि, और that too is completely free. It's not like it's a paid or something. I know there are certain features, like अगर आप अपनी personalized resume बनाना चाहते हो, that can be paid, but other than that it's free. So go and utilize this one. Now I'm moving to the next one, that is the AI आर्ट जनरेटर. आई नो बहुत सारे लोगों ने मुझे वीडियो में कमेंट किया था कि मैं कैसे ये इलस्ट्रेटर और ऐसे कैसे मैं वीडियोस जनरेट कर सकता हूँ बहुत अच्छी एंड ऑल. सो आई दैट्स व्हाई आई केप्ट दिस this AI tool here, so that I can also talk about it. कि आप ऐसे विजुअल जो आपको जस्ट एक प्रॉम्प्ट देना है, एंड दिस टूल विल क्रिएट वीडियो और मे बी पिक्चर्स बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट. और मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाती हूँ कि कैसे हाई लेवल के पिक्चर्स जनरेट होते हैं इससे. सो यू नो you need to give a prompt, and based upon your prompt, this tool will generate the image. So you can see that that's how this tool is working. So what you need to do, you need to just give a maybe prompt. Maybe you want to see a mountain with sun or something like that. You want to see a Titanic ship into the sea or something like that. Maybe I'm giving a very vague example, but based upon your requirement, you can just give a prompt, and it will generate a tons of image. And then you can also choose all the features, like how you want to design your image, और आपको कितना अच्छा रखना है अपनी image को, और कैसे maybe how you can improve the quality, or maybe all the features are available in this tool. And I'm sure like this is very useful those who are creating videos, or those who need
pictures for their maybe video or any purpose. Maybe I cannot say that किस purpose के लिए, but कई बार होता है हमें बहुत अच्छी images बनाने होते हैं अपने clients के लिए या उसकी requirement होती है, so based upon that you can go and create the images. So those who have requested specifically about this application, so I'm dedicating this to you so that you can see that this application is, this tool is there, and based upon that you can create the image. And I mean, I know like बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं जहाँ पे इस टाइप के ये जो कैरेक्टर्स होते हैं वो प्ले करते हैं एंड ऑल. सो इट्स वेरी इजी टू क्रिएट. आई नो कि पहले इट्स नॉट पॉसिबल, पहले लाइक यू नीड टू डू अ लॉट मोर डिजाइनिंग, मैनुअल डिजाइनिंग, बट नाउ आपको इतना मैनुअल डिजाइन नहीं करना है कि आप ट्री कहीं से लेके आ रहे हो, एलिफेंट कहीं से लेके आ रहे हो एंड देन सन कहीं. नो, you just you need to give a prompt, and based upon your prompt this tool will generate the image. So I found this interesting, although I'm not in this animation domain and all, but yeah, sometime I love to explore all the tools like which is already out there, so how it can make our life easier. So it's very good to know about what type of tools are available here. So yeah, and now I'll move towards the next one, that is the so now I'm talking about this website, that is Framer. सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप डिज़ाइन कर सकते हो लाइक जैसे कि हम कैनवा पे डिज़ाइनिंग करते हैं. सो बेस्ड अपॉन दैट आप यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट और सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हो. सो आई विल स्क्रॉल अप इट एंड आई विल शो यू कि क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यू कैन सी दैट यहाँ पे आप डिज़ाइन कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो. सो आप इस ऐप के थ्रू ही कोलैबोरेशन में भी डिज़ाइन कर सकते हो, और इस ऐप के थ्रू ही आप अपनी जो भी सोशल मीडिया पे पब्लिश करना चाहते हो वो भी कर सकते हो. सो आप देख सकते हो कि यहाँ बहुत सारे लेआउट्स और टेम्पलेट्स अवेलेबल है जिसके थ्रू आप अपनी इमेज या जो भी आप मे बी एनी लोगो और समथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू डिज़ाइन, मे बी एनी वेब पेज या जो भी आप इसे डिज़ाइन करना चाहते हो इसके थ्रू आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हो. एंड आई फाउंड दिस वेरी हेल्पफुल बिकॉज नाउ you don't need to go to the designer and all, and I know they will charge a lot for the web designing or the post or any, I mean, logo designing, like they are charging a lot. But as you know that these tools are free, and you can go and use these tools. Like I know graphic designing पे मैंने पूरा वीडियो बनाया कि जब आप सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हो, वेब डिजाइनिंग करते हो एंड ऑल, so that require I mean, if you hire a web developer or something, then you need to pay a lot more amount of money for that web designing or poster designing or flyer designing or any type of designings and all. And स्पेशली फॉर द वेब डिजाइनिंग उसके लिए क्या होता था कि बहुत सारे टेक पर्सन की रिक्वायरमेंट होती थी कि कोई C++, जावा एंड दोज टाइप ऑफ प्रोग्राम्स एंड ऑल. बट नाउ सिंस I mean, we are in this AI generation, everything is very free or very easy, I can say that. या आपको जस्ट प्रॉम्प्ट देना है और आपको जस्ट यूज़ करना है, देन यू कैन सिंपली गो एंड डिज़ाइन वट एवर यू वॉन्ट टू डिज़ाइन. सो गो एंड यूटिलाइज दिस टाइप ऑफ tools like which is free or at maybe free at certain extent, but I know this gonna help a lot to you. So yeah, go and utilize this tool. And now I'm moving to the next one. So that is about the super meme, and I know this can be useful for someone. This can be useful for, just a second, I need to adjust my video. So yeah, so I mean, I have added this just for a fun purpose because I know कि कई बार हम कुछ लोग होते हैं जो memes का पेज रन करते हैं मे बी. तो कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है मीम्स कैसे लिखना है या मीम्स के थ्रू, आई मीन, मीम्स की इमेज कैसे जनरेट करना है एंड ऑल. सो नाउ दिस इज द टूल दैट कैन टर्न योर टेक्स्ट इनटू द मीम. आप कोई टेक्स्ट बोलोगे वो उसको मीम में कन्वर्ट कर देगा. सो यू डोंट हैव टू स्ट्रगल कि मैं कैसे मीम बनाऊं या कैसे लिखूं या कुछ. So it's not like that. So there is a tool that can do work for you. So that is just for I mean, I thought why not to I mean, बहुत सारी सीरियस टॉक हो गई थी तो थोड़ा सा फन भी लेके आते हैं. सो या दैट्स व्हाई आई केप्ट दिस वन. तो अगर कोई है जो अपना मीम पेज बनाता है या फिर जैसे ऐसे मीम्स वाले मीम्स जनरेट करना है, so they can use this one. So yeah, this is all the tools, AI tools which I want to talk about. So yeah, and I hope you found this video helpful because I have talked about the dynamic of the topic. Like it's not on the single topic ki sirf job ke liye. This can be for
anybody, like maybe those who want to content write, those who want to resume write the resume, meeting notes or memes and all. So yeah, I hope this video is helpful, and if you found this video helpful, please hit on the like button, and also please add your comments. And I know your comments are pretty motivating for me, and I'm trying to reply all the comments, guys, because I know I read all the comments, because based upon your comments, like whatever your requirement is, maybe आप चाहते हो कि मैं किसी और topic पे बनाऊं, या फिर आपका कोई particular specific topic है that you want to learn, so you can add your comments there. So those who don't know, I'm from the pharma or pharma background in the research and development, so I do have, you know, those specifically pharma domain knowledge. So if you want to learn more about pharmacy कि क्या type के jobs available हैं, or if you want to maybe if you are a college student, maybe you are in 12th or something, and if you want to know more about the career कि आपको career में क्या choose करना चाहिए, which domain you want to choose, so I can also guide you from that perspective, because I have around 8 year of experience in the working industry or corporate industry, and I've done my masters, so I have a pretty much good amount of experience, so I can guide you based upon my experience as well. So it is not like कि मैं अपने channel पे बस ये सारी चीज़ें बना रही हूँ. I can also guide you for your career. So if you want to, you know more about, maybe if you need more mentoring or guidance with regards to your career or something, so you can also add your comment there, and I'm more than happy to, you know, give you the right guidance, because I know when I was at that stage, it's pretty difficult to find the right person who can mentor me, guide me. But yeah, and since I am here, I have dedicatedly created my YouTube channel for you guys, so I would be more than happy to, you know, guide you on this part. So thank you so much for watching my channel, and yeah, thanks for that. Bye bye.